Hello dear students, this is second lecture of chapter 14 sources of energy. In last lecture we discussed how hydropower plant and thermal power plant works. In this lecture, which is continued topic number 3, which is about conventional sources of energy, we are going to study biomass, or you can say biogas plant. So what is biomass? Biomass is the animal waste, and you must have heard of use of cow dung cakes as fuel, which is as a replacement of wood or coal. This indicates that animal waste have energy and can be used as fuel. So we can create biogas from these animal waste, that is known as biomass. So here is a schematic diagram of biogas plant, and I'll tell you how this works. So this first of all, this line, it is the ground level. The biogas plant is under the ground. This is ground level, and we fed the slurry here. The slurry is the animal waste and the water. This slurry from this point enters into this area, which is known as digester tank or gas tank. In this area, by anaerobic action of your small microorganism, the gas evolves. The anaerobic means in the absence of oxygen. These microorganisms do not require oxygen, and they decompose the bio waste into methane and hydrogen gas, and this gas is a wonderful fuel. Moreover, the remaining waste from this is अ वेरी गुड मैन्योर. ये बहुत अच्छी खाद होती है जिसे हम खेतों में यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस मैन्योर इज़ गुड इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंटेंट. So you can and one more thing, this gas from is collected in this tank, and this gas can be taken out from this tank through this gas outlet, and it can be used for cooking food. So we need to replace the manure weekly. Manure will go out, fresh slurry will come in, and gas can be taken out. So there are the important points in the working of biogas plant. Number one, anaerobic microorganism that do not require oxygen. They decompose complex compound of slurry into biogas. Second, biogas contains methane, carbon dioxide, methane CH4, carbon dioxide CO2, and hydrogen, etc. Biogas is an excellent fuel as it contains up to 75% methane. It burns without smoke and leaves no ash. तो जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है हमारी कोल और वुड बर्न करने की, कि उनसे बहुत स्मोक क्रिएट होता है जो एयर पोल्यूशन करता है, और राख बचती है जिसे हम ऐश कहते हैं. बायोगैस जलाने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना तो इसके अंदर स्मोक क्रिएट हो रहा है और ना ही इसके अंदर ऐश बचती है. लेफ्ट ओवर सब्सटेंस इज़ वेरी गुड मैन्योर. मैन्योर हम बोलते हैं खाद को, जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, खेती के लिए बहुत अच्छी खाद होती है ये. और इसमें हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेंट रिच होते हैं, जो कि एक अच्छे मैन्योर में हमें चाहिए. इट इज़ वेरी गुड मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. गैस प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये एनिमल वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत अच्छा तरीका है. अदरवाइज़ वो जो एनिमल वेस्ट है, अगर उसको प्रॉपरली डिस्पोज ना किया जाए तो उसके अंदर भी कई तरह के मच्छर मक्खी पैदा होते हैं और उसमें बीमारियां पनपती हैं. तो ये आपके पास जो बायोगैस प्लांट है, दिस इज़ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर एनिमल वेस्ट डिस्पोजल एंड फॉर प्रोड्यूसिंग गैस फ्रॉम बायो वेस्ट. ओके, next we will discuss the wind energy. Dear students, wind energy is a renewable source of energy. You must have studied in class 9th that unequal heating of water bodies and land mass. Let me show you in some blank space here. So you must have studied in class 9th. Suppose this is the boundary, and here we are having water. I have represented with blue.
and here we are having land mass. I have represented with black. So land mass is there, which I can draw trees for identifying the land mass. And this is the water, which I have represented with blue. So when sun shines, the land becomes more hot comparing to water. Water is cold, so air movement takes place from hot to cold. This happen in daytime, and in night time this cycle reverse. In night, air flows from cold to in night time air flows from water to land, बिकॉज पानी जो है वो देर से ठंडा होता है और देर से गर्म, और जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रात के टाइम पे जो ये एरिया है ये आपका कोल्ड हो जाएगा, और ये वाला एरिया आपका कंपैरेटिवली वार्म या फिर हॉट होएगा। तो ये जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है, इसकी वजह से हमारा एयर फ्लो बनता है, और इस एयर फ्लो को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सो कमिंग टू द टॉपिक, अनइक्वल हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज़ एंड लैंड मास जनरेट्स एयर मूवमेंट, एंड दिस मूवमेंट ऑफ एयर कैन बी यूज टू हार्नेस विंड एनर्जी। ये विंड माइल इज़ द डिवाइस बाय विच वी हार्नेस द एनर्जी। यू कैन सी हेयर large blades of windmill rotates with wind are connected to generator for generating power। तो ये आपके बड़े ब्लेड्स हैं विंडमिल के, ये रोटेट करेंगे जब इनके ऊपर हवा आएगी। हवा आएगी तो ये घूमेंगे, ये घूमेंगे तो ये इस एक्सल को घुमाएंगे जो कनेक्टेड है इसके सेंटर से, जो जनरेटर के अंदर आर्मेचर को घुमाएगी, और जनरेटर्स में से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होएगी विच कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दीज पॉइंट्स एसी पावर। ये इसका मैकेनिकल सपोर्ट है, ये आयरन स्टैंड है, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हर बार आयरन से बनाएं, लकड़ी से भी बना हो सकता है। और ये यहाँ से हमारे को इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट पावर मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो power, you can say power output. So what are the features of windmill? There are two plus points which I am going to discuss with you. The first point is wind energy is an environment friendly source. As you can see, it does not create any smoke or it does not create any pollution। so कोई smoke नहीं है हमारे पास, कोई fuel burning नहीं हो रही, एंड इट्स रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जब तक सूरज चमकता रहेगा, जब तक सनलाइट आती रहेगी, दिस सोर्स विल गो ऑन एंड ऑन। बट देर आर फ्यू लिमिटेशंस। आई हैव डिस्कस्ड 4 limitations of wind plant in this lecture। The first point is it can be established in only such areas where wind blows for majority of the time। This is your first point। जो ऐसे एरिया हैं जो समुंदर के पास हैं, जहाँ हवा ज़्यादा फ्लो करती है, जहाँ ज़्यादा विंड अवेलेबल है, अगर हवा नहीं बहेगी तो वहाँ पे विंडमिल लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि एक मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारे को एयर की चाहिए ही चाहिए। अगर इतनी स्पीड नहीं होएगी तो ये जो है जनरेट नहीं होएगी विंड। लार्ज एरिया इज़ रिक्वायर्ड। अगर हम सिर्फ 1 मेगावाट का प्लांट लगाना चाहते हैं, मेगावाट का मतलब होता है 10⁻⁶, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 वाट्स ऑफ पावर। तो उसके लिए हमारे को 2 हेक्टेयर जितना बड़ा जो एरिया है वो चाहिए होगा, एंड दे नीड वेरी हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। अगर कभी कोई स्टॉर्म आ जाए, कोई आंधी आ जाए, तो इनके जो ब्लेड्स हैं वो कई बार टूट जाते हैं विंड मिल के। ये बड़ी सेंसिटिव डिवाइस है, तो इसको हमारे को जो है मेंटेन करना पड़ता है। तो दैट इज़ अबाउट योर विंड मिल। विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।